Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. This is the third module of the topic set theory. In the first module, we learned the concept of the set theory. Second module, we learn about the open and close interval. And in this module, we are going to see the operation on the set. Now, this is an important part because पूरा chapter इसी से बनता है. Okay, so first let me share the screen with you. Okay. So, in this particular lecture, in class 3, we are going to understand about the operation on set. Set के ऊपर क्या क्या operations होती है, क्या क्या processes होते हैं. Okay. So let's start with the topic. Okay. Now, first of all, in this topic, you need to understand about the different notations. Okay. Now, we know that set is represented in a curly bracket. Now, there is something called as A union B. A union B को हम ऐसे represent करते हैं. Then A intersection B is represented like this, उल्टा U करके. If A is a subset of B, then it is represented like this. If A is not a subset of B, then it is represented like this. And for proper subset, we put this sign. Similarly, if A is a proper superset, so ऐसा sign. If A is a superset of B, then this particular sign. If A is not a superset, then this sign. If two sets are equal, then it can be represented like this. What is complement of A, that we will learn, and it is represented like this. अगर कोई भी element A, अगर set B में, if there is an element A, then it is represented like this. And if there is a set B and in that particular set B अगर A करके कोई element नहीं है तो उसे ऐसे दिखाया जाता है. Okay, turn by turn we will understand all these things कि ये union क्या है, intersection क्या है. So what is, if I say A union B, तो A union B का मतलब क्या होता है? So A union B is the set of all the values that are a member of A or B और बोथ. यानी कि हर वो एलिमेंट जो सेट ए में आता है या फिर सेट बी में आता है या फिर दोनों में आता है. सो सपोज दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी, देन ए यूनियन बी इज दिस पूरा. दिस इज कॉल्ड एज ए यूनियन बी. Perfect. All these things we have studied in the school. Now, what is A intersection B? A intersection B is represented by ulta U and is a set of all values that are members of both A and B. So A intersection B में हर वो एलिमेंट आएगा जो A and B दोनों में होना चाहिए. ठीक है. So here you can say that this is set A and this is set B, और इसके बीच में ये वाला जो पोर्शन है ये वो, इसके अंदर हर वो एलिमेंट होगा जो सेट ए एंड सेट बी दोनों में होता है. So this is nothing but this part is A intersection B. Now, what if I say A difference B? A difference B को ऐसे लिखा जाता है A minus B like this. Okay. So this is nothing but the set of all elements which are member of only set A and they should not be the member of set B. तो इसमें आपको हर वो एलिमेंट लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ सेट A में आता है. तो this is nothing but this, all these elements. Here all the elements are member of only set A. They are not the member of set B. Similarly, अगर B minus A बताना है, B minus A, तो B minus A में कौन आएगा? This, जो भी एलिमेंट्स इधर है, this all these elements are belong to only set B. ठीक है. Now what is symmetric difference? That is called as A delta B is a set of all values which are in one of the sets but not in both. तो यहाँ पर हमें हर वो एलिमेंट लिखना है जो सिर्फ और सिर्फ A में है या फिर सिर्फ और सिर्फ B में है. कॉमन वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं. ओके. नाउ
Next is what is complement of A. So here you can see कि this is the universal set. ये पूरा अपना rectangle box, ये एक universal set है और उसके अंदर set A है. So here all the elements belong to set A और ये वो हर element है जो कि set A में नहीं है, but they are the part of universal set. Such elements are called as, they form the complement set. तो complement set में हर वो element आता है जो कि यूनिवर्सल सेट में तो है, बट इट शुड नॉट बी इन द सेट ए. मतलब कॉम्प्लीमेंट सेट में एक वाले एक भी एलिमेंट नहीं होंगे, एग्जैक्टली उसका उल्टा है. ओके, दिस वी हैव डन a minus b. नाउ सपोज देयर इज अ यूनिवर्सल सेट which has the elements 1 2 3 4 5 6. Set A has 4 elements 1 2 3 4. Set B has 4 elements 2 3 4 5. Then what is A minus B and what is B minus A? तो पहले तो हम डायग्राम से अगर देखें तो this is suppose set A, this is set B. The common elements in both of them is 2 3. Apart from that, set A has 1 and 4, set B has wait sorry 2 3 4 4 L, अच्छा 4 भी कॉमन है दोनों में. So 1 and 5. ठीक है, like this. So what will come in A minus B? This is A minus B. So A minus B has only one element and that is 1. Similarly, B minus A has only one element and that is 5. ठीक है, next. Universal set. Set A is given, set B is given. यहाँ से हमारी पूरे जितने भी डाउट्स है सब सॉल्व हो जाएंगे. Now, number of elements in set A is 4. Number of elements in set B, that is also 4. Here you can see that there are 4 different elements. Number of elements in universal set, it has got 7 elements. Now what is A union B? A union B में हर वो एलिमेंट आएगा जो A में है एंड B में है, और या तो फिर दो में से कोई एक में होगा तो भी चलेगा. So it is 1 2 3 4. Set A के all the elements we have to write, and 3 4 we have already written, so we will write 5 6. This is called as A union B. Similarly, A intersection B, only the common elements. Common elements in both the set is 3 and 4. Now, next is A complement. A complement में हर वो एलिमेंट लिखेंगे जो यूनिवर्सल सेट में तो है बट A में नहीं है. So A has 1 2 3 4, this 4 elements, so we cannot write that. उसको छोड़ के बाकी सब लिख दो. So it is 5 6 7. Similarly, B complement is 1, फिर 2 and 3 4 5 6 already written and 7. A minus B, only the elements which are there in A, that is 1 comma 2, and B minus A is 5 comma 6. So I feel this is done and you have understood this very well. Okay. Okay. This is the list of the formula of the topic set theory. Please वीडियो को पोज करें एंड राइट डाउन ऑल द फॉर्मूला. स्पेशली ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, 3 सेट के लिए ये बहुत काम में आता है. एंड दिस फॉर्मूला, this is very useful. Okay. First question, set A, set B and set C given, and you need to find then A intersection B union A intersection C is equal to. तो A intersection B में कौन आएगा? Common elements between A and B, that is 3 4, और कोई है 8 10, 10 is there. Similarly, A intersection C में common element is 4 5 6 12 14, nothing else is common. Correct, 2 3 एक ही कॉमन है और दोनों का हमें लेना है यूनियन. तो यूनियन क्या हो जाएगा? सो इट इज A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C. So it is 3 4 10. So answer is option A, 3 4 10. ठीक है. Next, there is a set
n which has the elements a such that elements कैसे हैं? Elements are of the form a into n, wherein n belongs to the natural number. So you need to find n5 and n7 का intersection. अभी तो ये क्वेश्चन क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, so I will explain you the concept. Otherwise आप इसको बाय ऑब्जर्वेशन से भी आंसर दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल n5 में कौन से एलिमेंट्स होंगे? So elements are of the form a into n. Okay, a here a is 5 and n is a natural number. तो पहला एलिमेंट होगा 5 into 1 because natural number starts with 1. Next element 5 into 2 because natural number starts with next natural number is 2. Then 5 into 3 इस टाइप के होंगे, करेक्ट? So basically n5 में कौन से एलिमेंट्स होंगे? These are nothing but the multiple of 5. So it is 5, 10, 15, 20, like this. Similarly, can we say कि n7 में there would be multiple of 7, the elements would be multiple of 7, ऐसे. So we need to find n5 intersection n7. मतलब हर वो एलिमेंट जो कि n5 and n7 दोनों में होना चाहिए. Can we say that is nothing but the multiple of 35 because 5 and 7 का LCM is 35. तो पहला नंबर 35 होगा, सेकंड 70 होगा, थर्ड 105 होगा, ऐसे. So answer is option C and 35. Basically, you just need to find the LCM of 5 and 7. Okay. Next, if A is a subset of B, A is a subset of B and B is a subset of C, then cardinality of A union B union C कितना होगा? तो आप देख रहे हो कि ए बी का सबसेट, बी सी का सबसेट, यानी कि सबसे छोटा सेट ए है, सबसे बड़ा सेट सी है, और सी के अंदर हर वो एलिमेंट होगा जो ए एंड बी में है. सो ए यूनियन बी यूनियन सी इज नथिंग बट, कैन वी से इट इज सेट सी ओनली. सो द कार्डिनलिटी ऑफ तीनों का यूनियन इज इक्विवेलेंट टू द कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी. निमसेट 2020 का दिस इज द क्वेश्चन. Next, let P dash and Q dash be the complements of P and Q, then the set P minus Q union Q minus P union P intersection Q is. Okay, P minus Q क्या होगा? तो this portion you can see this, we can say this is P minus Q. Next, Q minus P. Q minus P would be this. This is Q minus P. Correct? ये हो गया P minus Q. This is Q minus P and P intersection Q, यानी कि ये वाला पार्ट. करेक्ट? दिस इज P intersection Q. करेक्ट? तो हमें तीनों को ले लेना है, तीनों का यूनियन. सो कहना है तीनों का यूनियन वुड बी दिस डिजाइन इटसेल्फ. और ये डिजाइन क्या है? दिस इज नथिंग बट P यूनियन Q. करेक्ट? ये P यूनियन Q को रिप्रेजेंट करता है. सो आंसर इज ऑप्शन ए, P यूनियन Q. Okay, so thank you for watching this video, and in this video we learned about the operation on sets. In the next video we will discuss more about the set theory class 4, and in that video we will solve the exam level questions. If you understood, then please subscribe to my channel, that is Math is Easy by Disha Shah, and keep on watching videos and keep on practicing math because math is easy. Thank you.